come all the way from abroad. Yes, I am coming from Europe, from Serbia. So what did you feel when you say the gatherings around such holy place like Durgyana Mandir? This is not only about Durgyana Mandir, this is about whole of India. So even if you go to north, even if you go to south, northeast, any place, it's the same problem. Garbage is all over the place, all over our holy places, everywhere. Hospitals, streets, neighborhoods. So India is too beautiful to be this dirty. So we have to respect our country in a proper way. It's easy to say Jai Mata, Bharat ki Jai or anything as such. We need to give proper respect to our country. तो मेरा मैसेज आपके लिए है, सभी को अपनी घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना है, इतना काफी है. How did the local people react when say you cleaning the area? You can see how they're reacting. There are so many good people who are coming to help out. So that means that everybody wants to see this change happen. Everybody wants to see India clean, but they're scared to start. They think nobody cares. So let's just take that initiative and keep 2 meters outside our homes clean, outside our shops or mandirs. Sir, after doing the seva, how do you feel about Amritsar and Amritsar? Oh, Amritsar is amazing. I love the food. People are very nice. The place is amazing, but we need to clean it up. Same as every other place in India. Once we clean India, the India's shine is going to come out. We're going to see the true beauty of India. Message to government. No message. I am Gauravjit Pasricha. This is my brother, Dr. Jagmeet. So I was following this guy since long, and I really, admired what he does, coming from a foreign nation and loving this place so much. मैंने देखा भी, अगर एक बाहर का बंदा इतना प्यार कर सकता है इंडिया को आके, हर जगह उसको गंदगी अच्छी नहीं लगती, क्लीन करना चाहता है, तो मुझे लगा I just wanted to be the part of it. तो I got in contact with, I want to support him, I felt like I can be a part of this mission. क्योंकि कितना अच्छा लगता है जब चीज़ साफ़ हो जाती है. ये वही स्ट्रीट्स है, अगर हम दिवाली के पहले इतना साफ़ करते हैं तो बाहर भी साफ़ रखें. खुद को सबको कितना अच्छा लगता है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, उनको भी अच्छा लगेगा. तो ही इज़ डूइंग सम अमेजिंग वर्क, सो वी होप वी लर्न समथिंग फ्रॉम हिम. सर ये क्लीनिंग जो होगी मंदिरों में होगी, गुरुद्वारों के पास होगी क्या पूरी? नहीं. ये तो कैंपेन पूरी सिटी के लिए है, बल्कि कोई वो तो वैसे ही आप एक प्लेस चूज कर ली कि चलो ठीक है दुर्गियाना टैंपल ਦੇ ਕੋਲ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ. ਇਹ ਸੀ ਚਲੋ ਉਧਰ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਆ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਕੰਮ ਆ, 98% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ. ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. अगर हर एक पर्सन ध्यान देगा, कूड़ा चकेगा अपनी जगह, तो वैसे ही सारी जगह क्लीन हो जाएगी, कुछ रहेगी नहीं गंदगी. हर पर्सन सोचूगा. For Diwali, we clean our homes to invite Lakshmi Ma. So we clean all our homes. The same way we need to clean our streets to invite the divine. So please, let's keep it clean.